अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। आज हम कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स पर बात करेंगे कि कम्युनिकेशन में कौन कौन से एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं और हम किन बेसिस पर कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन को समझने के लिए कम्युनिकेशन या इबलाग का समझना लाजमी है। कम्युनिकेशन को जोसेफ डेविटोस ने इस तरह डिफाइन किया है कि द एक्ट बाय वन और मोर पर्सन्स of sending and receiving messages distorted by noise within a context with some effect and with some opportunity for feedback। और इसकी अगर हम मज़ीद वजाहत करें तो दो अफराद का आपस में या एक फ़र्द का किसी ग्रुप से या किसी एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप से गुफ्तगू करना और इस गुफ्तगू के दरमियान किसी किस्म की मुदाखलत और फिर अपनी टारगेटेड ऑडियंस के जवाब मिलना, ये सब कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स में आता है। चलें इन्हें एक एक करके मज़ीद क्लेरिफाई करते हैं ताकि आपको और अच्छे अंदाज से समझ आ जाए। डेफिनेशन के मुताबिक कम्युनिकेशन के अनासर दर्ज झेल हैं: सोर्स, सेंडर, रिसीवर, चैनल, नॉइस, फीडबैक और डिकोडिंग। चलें इन्हें प्रॉपर डेफिनेशन के साथ और मिसालों के साथ समझते हैं। पहला आता है सेंडर या सोर्स। सेंडर इज़ द आइडिया जनरेटिंग कंपोनेंट इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। इन ह्यूमन कम्युनिकेशन, sender may be a person who creates or formulates the message to be sent to the receiver. Being the primary source of the message, sender is also termed as source. In media, for example, news reporter is a sender of source as he or she constructs the message. News story: in a musical performance, the singer is the sender as he is enjoyed by the audience. The source sender has three functions: to decide what is to be communicated, encoding, ट्रांसमिटिंग द मैसेज टू बी रिसीवर। सबसे पहला एलिमेंट आता है सोर्स, यानी कोई भी इंडिविजुअल और ग्रुप जो मैसेज प्रोड्यूस करता है वो सोर्स कहलाता है। फिर आता है इनकोडिंग। इनकोडिंग रिफर्स टू द एक्टिविटीज़ दैट अ सोर्स गोज थ्रू टू ट्रांसलेट थॉट्स एंड आइडियाज़ इनटू अ फॉर्म दैट मे बी परसीव्ड बाय द सेंसेस। व्हेन यू हैव समथिंग टू से, योर ब्रेन एंड योर टंग वर्क टुगेदर टू फॉर्म वर्ड्स एंड स्पोकन सेंटेंसेस। When you write a letter, your brain and your hand start to write. Encoding in a communication setting can take place one or more times. In a face-to-face conversation, the speaker encodes thoughts into words. For example, over telephone, mobile text, WhatsApp, etc. सोर्स अपने ख्यालात को पैगाम में मुंतकिल करके पेश करता है, उसे इनकोडिंग कहते हैं। फिर आता है मैसेज। अ मैसेज इज़ एन इंफॉर्मेशन, आइडिया, थॉट और फीलिंग्स that are transmitted to the receiver. It drives communication. Without it, there will be no communication. For communication to be successful, receiver should first of all understand the message. For this, sender should speak in a language that is known to the receiver. The message in any verbal or non-verbal method that produces meaning in the mind of the receiver. Simply, it is the meaning transferred from sender's mind to receiver's mind. This happens mainly in two ways: verbal and non-verbal communication. Verbal message means written or oral message. They are composed of words. Example: a newspaper report or a lecture by a teacher. Non-verbal communication. Non-verbal messages are those communicated through our behaviors, movement, actions, clothes, style of conversation, pitch of the sound, etc. The fundamental in message construction is the agreement between sender and receiver in the code used for it. If the source cannot identify the language or meaning of the message, the communication will be defective. कोई भी ख्याल या सोच सोर्स की तरफ से वर्बल या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की सूरत में रिसीवर तक मुंतकिल हो, वो मैसेज कहलाता है। फिर आपके पास आता है चैनल। द चैनल मीन्स मीडियम by which sender transmits the message to the receiver. Our five senses such as hearing, touching, smelling, tasting, seeing are basic natural channel of human communication. Communication can be classified on the basis of five basic natural channels. They are tactile communication, communication by touch or taste; olfactory communication, communication by smell; audio communication, communication through sound waves; visual communication, communication through visual elements or properties. We use any technically developed medium like television, newspaper, books, etc. with the help of one or more of these five senses. Similarly, sender uses one or more channels to maximize the communication effect.
For example, multimedia classroom where teacher uses projector, blackboard, lecture, gestures, etc. simultaneously. इसको अगर आसान अल्फाज में समझें जिसके ज़रिए पैगाम रसाई हो सके वो चैनल कहलाता है। आइए व्यूअर्स, जितना हमने जो आधा प्रोसेस कवर किया है उसे एक मॉडल के ज़रिए समझते हैं। एक शख्स जो सोर्स है वो एक मैसेज को इनकोड करता है, फिर उसे एक चैनल के थ्रू अपने रिसीवर तक पहुंचाता है। फिर रिसीवर उस मैसेज को डिकोड करता है और वो अपना जवाब देता है, जिसे हम फीडबैक कहते हैं। फिर आता है नॉइस। नॉइस और कम्युनिकेशन बैरियर is anything that distorts message. Noise may originate in any of the component of communication like source, message, channel, context, receiver, etc. Noise is presented when there is difference between the message sent and received. Communication is not possible without noise, but its effects may be reduced through various methods such as using good grammar, clear voice, simple language, quality signal, etc. कम्युनिकेशन के दरमियान किसी भी किस्म की मुदाखलत नॉइस कहलाती है। नॉइस इज़ ऑफ डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर एंड रीजंस ऑफ द डिस्टोर्शन। दे आर semantic noise. It occurs when different people have different meaning for different words and phrases. For illustration, soda. Environmental noise. This form of noise can be referred to source of noise that are external to the communication, but that environmental noise out of the communicator's control. A noisy restaurant, vehicle noise, work tool, classroom disturbance. Psychological noise. Any communication error due to the psychological reason. Example, a fearful audience can't enjoy the musical program. Depression, stress, etc. Linguistic noise. Language related problems in communication. Example, poor grammar, complex sentence structure, rare vocabulary, etc. Technical noise. Medium related communication barrier. Example, poor signal affecting picture clarity of television. Physiological noise. Tiredness, feeling of hunger, body discomfort. Now, decoding. The decoding process is the opposite of the encoding process. It consists of activities that translate or interpret physical message into a form that has eventual meaning for a receiver. As you read these lines, you are decoding a message. If you are playing the radio while decoding these lines, you are decoding two messages simultaneously. One is oral and another is visual, such as the story read by editors. A reporter sit in a press conference and take notes. सोर्स के पेश करदा पैगाम को समझना डिकोडिंग कहलाता है। ये इसकी आसान अल्फाज में डेफिनेशन है। फिर आता है रिसीवर। द रिसीवर इज अ टारगेट ऑफ अ मैसेज. इट हैज़ अल्टीमेट गोल. Idea receiving and in communication process is called receiver. A person or thing may be at the receiving end. The receiver's role is as important as sender's role. As receiver play the role to receive, decode and response to the message through feedback. Decoding is a process of extracting a message from a code and interprets it. For this, sender and receiver should have knowledge about the code used in communication. For example, receiver may be audience watching movies, person listening to music, student hearing a lecture, or a program getting an email from a remote server. Communication fails or remains faulty when message is rejected or misinterpreted by the receiver. जिस तक पैगाम पहुंचाया जाए वो रिसीवर कहलाता है। फीडबैक. इंफॉर्मेशन और मैसेज that is response, reply, feedback. If you get clapping for a singing, clapping is a feedback. Feedback originated either from the source or message is called self-feedback. Example, when you talk to somebody, you hear your voice and evaluate your tone, pitch, etc. Another type of feedback is that originated from the receiver. It may be in the form of question, applauses, puzzled look, etc. Feedback may be negative or positive, immediate or delayed. Receiver's indication to the senders that the message was not received well is called negative feedback. Example, looks of indifference, rejection, or boredom may be considered as negative feedback. Receiver's favorable response like acceptance, applauses, etc. are positive feedback. Feedback at the time of the communication itself or just after
It is immediate feedback. Example, applause a singer gets during the performance. Receiver's response relatively much after the communication is delayed feedback. Example, letters to the editor. रिसीवर्स का जवाब फीडबैक कहलाता है। अब इस मॉडल को दोबारा एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मैं जो कि सोर्स हूँ अपनी रीडिंग और थॉट्स की बेसिस पर एक लेक्चर डिज़ाइन करता हूँ जिसे इनकोडिंग कहते हैं। फिर इसे यूट्यूब पर अपलोड कर देता हूँ जो चैनल का काम करता है और मेरा ये लेक्चर मैसेज कहलाएगा। अब मेरी टारगेटेड ऑडियंस आप हैं तो आप रिसीवर कहलाएंगे। फिर आप इस लेक्चर को समझेंगे और जहन नशीं करेंगे तो ये डिकोडिंग कहलाएगी। इस दौरान किसी भी किस्म की मुदाखलत, चाहे वो नेट स्लो होने की सूरत में हो या बाहर से आने वाले शोर की सूरत में, नॉइस कहलाएगी। फिर आप अपने ख़यालात पेश करेंगे जिसे हम फीडबैक कहते हैं, जिसका मुझे इंतज़ार रहेगा। इसी के साथ आज का लेक्चर इख्तिताम को पहुंचता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।